ये वीडियो अपलोड किया हुआ था फेसबुक की यूजर लेचाइना निकल। हाल ही में उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया हुआ है जहां पर उनका मानना था कि जब वो रात को अपने ड्राइंग रूम पर अपने दोस्तों के साथ टीवी वॉच कर रहे थे तो उसी दौरान वहीं पर कुछ अजीब सी एक्टिविटी शुरू होती है जिसको देखकर वो यहीं से भाग जाते हैं। जब बाद में ड्राइंग रूम की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो हमको कुछ ये नजारा देखने को मिलता है। Ni tan Pero la tarde. película estaba fuertísima. Sí, tiene razón. La película Pero, o es sea, de miedo. Usted sabe que a mí me gusta ese A mí tipo de también películas. me encanta eso, Pero de verdad que. Mira, a ver, eso yo no me percaté. Eso yo no me percaté. yo tampoco, todavía no. Mira cómo se mueve. No, Dios. Ahí me doy cuenta, ¿ves? Mira, ves. Nene es el único que se pega. Te soy sincero, nene. Yo pensaba que tú ahí estabas bromeando, como siempre sabes hacer. Yo sé que lo que eso también te estaba molestando. Sí, ve. Y yo te decía que no digas esa cosa porque ahí la china no quería. Yo no tengo un buen No miedo. iba a terminar, no iba a terminar. Ahí de ver con la buen película. miedo. De verdad. Si hasta ahora tengo frío. Nosotros no les queremos creer a nadie. Se me vuelve a desconectar la piel, bro. Si noche ni podíamos dormir. Pasamos toda la noche despiertos. Porque yo no iba a entrar, Yo tampoco, pero ¿qué más nos quedaba? A esa hora, ¿dónde nos íbamos a ver? O sea, no, Y seguía menos. Yo ya viendo Sí. eso yo me No, voy. es que ahí no. Yo pensaba que Nene estaba jugando una broma. Porque el nene siempre sale con Sí. sus bromas así, por eso Juanca no le quería hacer caso. Yo no le quería hacer caso. Mira, ahí se movió la maleta, Es que Y ahí tú es te como que la das cuenta, mi levantan. amor, ahí tú te das Y ahí yo cuenta. ahí yo le dije a Es como Juanca, que la levantan, güey. Ujú. Eso no me dijo. Yo dije ya no quieren seguir viendo la película, por eso están actuando así. जैसे कि आप लोगों ने देखा पहले तो एक टेडी बेयर का लेग मूव होते हुए दिखाई देता है जिसको देखकर उनका दोस्त उस चीज के बारे में बताते हैं लेकिन बाकी दोस्त उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन थोड़ी देर बाद टीवी के नीचे एक पेपर बॉक्स मूव होता हुआ दिखाई देता है जिसको देखकर ये लोग काफी चौंक जाते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी। ahí fue donde más frío me dio. ¿Está más frío? Sí, cuando O sea, ya sentían un frío ahí. Sí, ahí ya Claro, estaba frío. Ahí el ambiente ya estaba tenso, frío. Sí, estaba raro. Ahí estaba frío el ambiente. ¿Tú crees que va a ser una película? Créeme Pero es que que- yo no Hasta creía donde en mi esas mamá cosas. me ha dicho, cuando uno ve esas cosas así de miedo, o sea. Mira, otra vez. Uy, no, Dios mío santo. Pero ahí nadie se percató. Solo el nene. No, ahí medio lo vi, pero estaba algo como que esperando que pase algo más, porque mira. Yo pensaba que tú estabas bromeando, te lo juro. Pero sí se percatan de algo que hay como una sombra Sí, así que como va que y va y viene. viene. Uno como circulitos. Mira. Ahí pasó por acá. Es como una sombra No sé, fuerte, ¿será- blanca. ¿Será que es algo que anda rondando porque pasa? Es como que entra y sale. Es que entra y yo- sale. mira, Uy, mira, no. mira, ahí sí ahí me está di la cuenta. sombra, ahí está la sombra. Ahí Ahí yo está me la di sombra. cuenta. Ahí yo me di cuenta. No, ya no veamos esto, bro, te lo juro. Me está dando miedo de nuevo. No, mijo, esto tenemos que subirlo, Pero es que- Esto, mijo, uy, si es que hay alguien Créeme que que- sabe de estas cosas, claro. que nos ayude. Ay, yo me quiero ir. No. Mira la sombra blanca, ¿sí la viste? Sí. Sí, pero no. Ahí sí. Ahí yo fue que ya comencé a sentirme mal. ¿Por qué? Porque mira, ve, eso yo sí lo vi claramente, así, de reojo. Oye, ¿por qué se Mira, sí, ¡Uy! sí viste, eso sí. Ay, qué- Eso sí. Uy, mira, Yo no sabía por dónde ir, te lo Uy, juro. miren. Yo no sabía qué era, yo pensaba que era de pronto Uy, Ya, mira, No, o sea, yo sí lo vi mira, de reojo. और दोबारा उस टेडी बेयर की कई बार लेग मूव होता हुआ दिखाई देता है जिनको ये सब नोटिस करके उनकी तरफ देखते हैं तो अचानक उनकी सोफे के पीछे एक चीज नमूदार हो जाती है और ये लोग जैसे ही वो जगह को देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसकी थोड़ी देर बाद हालात काफी भयानक मोड़ लेते हुए दिखाई देता है और हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। ¿Por qué mis ojos se Sin ven así? palabras, güey. ¿Por qué mis ojos se ven así? Porque ese es el reflejo, Eso ya es de la cámara, mijo. Como la cámara es blanca y negra cuando está todas las luces apagadas. ¿Por qué no prendieron las luces? Es que estábamos con la luz del televisor, Claro. pero como que estuviéramos en el cine. Yo digo, Uy, mira, Mira, ¡Uy! ahí metieron la botella. Sí, la Ahí botella. metieron ¡La botella! ahí metieron la botella y yo de una salí corriendo. No, yo te lo juro que yo no aguanto un día. Mira, se cayó Uy, el no, ahí. no. Yo no aguanto un día Pero, más. uy, mira, ¿sí ves la luz que pasa Mira, por ahí? ahí en la puerta de alguien como la tenía trancada. Mira, siempre ve. Uy, mira. ¿sí ves?
Sí. Ahí pasa. Mira, del susto, ¿sí es lo que me pasó del susto? Él, Uy, hasta el cuadro, Dios mío santo. Oye, pero ¿por qué se cayó todo? No sé, ahí nosotros nos fuimos, nosotros nos íbamos a quedar ahí. Mira, mira lo que pasó ahí, mira lo que pasó ahí. Mira, 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 mira eso, mira Ya eso. cerraron la puerta. No, sé si hay algo o alguien que nos está haciendo asustar, pero te lo juro que yo ya no aguanto. Estábamos solos en la casa, pero yo... Mira, ahí están las no luces quiero ver esas. nada. percátate de las lucecitas que pasan. No, yo no quiero ver. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Mira la maleta, mira cómo la van a los ¿Por qué no planos. hermano? ¿Por qué no se pusieron a orar? Cambiémonos de casa. Tienen que No, orar. que eso ya... No, eso de ley, eso de Sí, ley. nos vamos. Uy, pero ese peluche, Dios mío. Mira, como que lo están jalando, ¿sí ves? Es como que se para de cabeza, Ese es el ¿qué? peluche que te regaló Juanca. El que tú dañaste, ¿verdad? Mira, ¿sí viste lo que pasó aquí? Mira, aquí ya... ¿Sí viste? Ahí pasa, Mira, ahí mira. pasa. Sí, mira. Mira, mira esa lucecita. Mira, es Yo como, sí me es como, quiero como ir. que fuera que algo Yo, pasa. eso nosotros no lo vimos porque estábamos afuera. Estábamos afuera. Pero es como que algo pasa. Date cuenta que es como que... Mira, ¿ves? Mira, ahí va. Es como que algo pasa. Mira. Son varios, no es uno, Eso son nosotros no varios. vimos porque estábamos afuera. Juanca, son varios. Míralo, mira, ahí va. Ahí va. Son varios, Juanca, son varios. ¿Qué Son será? varios. ¿Qué no uno. será? Mira, Mira, ¿sí son ves? espíritus. Esos como son que algo espíritus. está Mira, el pasando. televisor. Y mira, como que, mira, date cuenta Y que mira como esa que alguien cara. está sentado aquí. Mira. No, Juanca. Tenemos que irnos. Uy, Yo le dije que cojan su maleta. Apagaron el Apagaron el televisor. televisor. No tenemos, mira, se está moviendo, mira. Y es como que estuviera aquí, ¿ves? Claro. Pero desde allá se vinieron. Pero es el las ganas. peluche, mira, se lo llevaron. Y la coincidencia que de ahí mismo salió esa sombra de ahí abajo. Sí. Uy, No, Juanca, yo mírame. Mírame, güey. Yo digo que pasemos esta noche aquí y más temprano Sí, ir. vamos por aquí abajo, mijo. Yo te acompaño por aquí abajo. Todos juntos. De verdad que yo estoy temblando, tengo miedo. Tengo mucho miedo. No, tenemos que irnos, si nos vamos a ir. जैसे कि आप लोगों ने देखा कमरे में काफी एक्टिविटीज होते हुए दिखाई देता है। टेबल से बोतल गिरना, पेपर बॉक्स गिरना, टीवी ऑफ हो जाता है, दरवाजा भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक और चीज नोटिस किया, जैसे ही टेबल से बोतल गिरता है तो वहीं पर एक ऑब्स ऊपर की जानिब जाते हुए दिखाई देता है, और जब टेलीबेड सोफे से गिरने के बाद वहीं पर भी एक ऑब्स ऊपर की जानिब जाते हुए दिखाई देता है, और ये ऑब्स कई बार हमको नजर आता है, जिसको गोश्त की अलामत समझी जाती है। इस वीडियो के बारे में मैं 100% श्योर हूँ कि वहीं पर किसी मखलूक या जिन्नात का बसेरा है। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक यूजर डार्ली, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि डार्ली की ऑफिस की सीसीटीवी कैमरा किसी रीजन की वजह से चेक कर रहे थे, तो उसी दौरान कुछ ही खौफनाक नज़ारा भी हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हॉलवे में एक वाइट फिगर देखी जा सकती है जो दरवाजे की नजदीक आकर गायब हो जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई वहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है, और या लाइट के रिफ्लेक्शन से हमको कुछ ये नज़ारा देखने को मिला। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर क्लिप स्टोर, गचन, डाइचन और यस के तीनों फ्रेंड एक ऐसे ही अबांडेड जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो जापान की काफी पुरानी और हॉन्टेड जगहों में शुमार होती है। ये गांव काफी बुलंदी पर वाक़या है, जिसकी वजह से 1 किलोमीटर पैदल चलकर इस लोकेशन पर पहुंच गए। माना जाता है कि इस गांव में कई लोगों की पुरअसरार मौत के बाद बाकी लोगों ने ये गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया, और जैसे ही ये टीम इस लोकेशन पर पहुंचती है तो एक जगह को तय करके कि 30 मिनट बाद इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे, और जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। 方に進んでいきたいと思います。
倒壊しまくってますね。家が建ってたんでしょうね、ここも。とかこっちは。なんか物音がえぐいよ。ちょっと足も悪いから。よいしょ。क्या आप लोगों ने देखा यस के जब अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसकी पैर के नीचे एक फेस को देखा जा सकता है जो काफी भयानक होता है, लेकिन इस चीज को वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। और जब गाचान एक अलग जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हालात काफी भयानक मोड़ लेते हुए दिखाई देता है और हमको कुछ ये नज़ारा देखने को मिलता है। お、裏側。いや、もう無理だね。傾いてるしな。え、走る足音みたいな人。えはめっちゃ誰もいるわけないけどさ。嘘。絶対カメラ入ったって今の音。マジで誰？くそ、校舎内が入れそうにない。絶対落とした。何？無理やなこれ。くそ、ちょっと待って。絶対ヒルがついてんだよね。ちょっと待ってくださいね。痛い。やっぱついとった。くそ、マジでなんなん。ここちょっとみんなで来ないとな。検証したいね。物音すごい。お、何？タイマー鳴った。いや、めっちゃ物音したね。今入るから。ちょっと待って。30分経ちました。戻ります。क्या आप लोगों ने सुना वीरान घर की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान छत की तरफ से किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और कुछ टाइम बाद किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है। और उस एक्टिविटीज को देखने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो अचानक उसकी मोबाइल का अलार्म शुरू होता है, लेकिन उसके साथ दोबारा घर में किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो काफी घबराता हुआ दिखाई देता है। तो गाचान इन्वेस्टिगेशन खत्म करके अपनी मुकर्रर टाइम पर उसी जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 दोस्त पहुंचते हैं और तीसरा साथी का काफी इंतजार करने के बाद वो वहां पर नहीं पहुंचते। तो दोनों दोस्त उस तरफ जाकर अपनी दोस्त को देखने के लिए जाते हैं तो उसका दोस्त एक मकान में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो फौरन उसको उठाकर यहीं से बाहर निकालते हैं और जब बाद में उसकी कैमरा की फुटेज चेक करते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है।ちょっと待って。
क्या आप लोगों ने देखा जब डाइचान एक घर की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जैसे दरवाजे के ऊपर उसका लाइट पड़ता है तो दरवाजे की शीशे में कोई मखलूक खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और जैसे ही दोबारा उस जानिब देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और कुछ टाइम बाद जैसे ही वो कैमरा राइट की तरफ घुमाता है तो वहीं पर जापानी ट्रेडिशनल क्लॉथ में कोई मखलूक खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही उसकी दोस्त डाइचान को यहीं से निकालते हैं तो वही मखलूक उसी जगह पर दोबारा खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये जगह हॉन्टेड है और अब तक उन लोगों की आत्मा यहीं पर भटक रही है और या कोई और मखलूक का यहाँ पर बसेरा है? तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक यूजर केल्सी मिलर। केल्सी ज्यादातर वीडियो अपनी डॉटर की अपलोड करते हैं अपने टिकटॉक अकाउंट पर, लेकिन एक दिन वो घूमने के लिए बाहर जा रहे थे तो अचानक उनके घर के सामने उसकी डॉटर गिरते हुए दिखाई देता है और वो बार बार यही कहती है किसी ने मेरे को धक्का दिया। जब इस चीज के लिए उन्होंने घर के सामने की सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिला। क्या आप लोगों ने देखा जैसे कोई मखलूक उसको हाथ से पकड़कर पीछे की ओर खींचती है तो फौरन उसका फादर उसको उठाती है, और अगर उसको हम गौर से देखें तो ये साफ तौर पर गोस्ट एक्टिविटीज दिखती है। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर मास्टर गाला, जिसका ताल्लुक फिलिपाइन से है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो हॉन्टेड और अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाल ही में वो एक ऐसे कब्रिस्तान की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो काफी हॉन्टेड मानी जाती है। करीबी रहने वालों का ये मानना है कि यहीं पर अजीब किस्म की आवाजें और यहाँ तक एक ब्लैक साया को भी देखा है। जब गाला ने इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसी दौरान कुछ ही खौफनाक नजारा अपने कैमरा की आंख में रिकॉर्ड किया। Isang madaling araw dito sa sementeryo, tapos hindi ko talaga mapansin, meron talaga akong hinahanap na puntod ng ex ng kaibigan ko. And then ngayon samahan nyo kami na libutin tong sementeryo dahil as in wala na talaga kami makitang puntod eh. Hinahanap namin yung puntod ng kanyang ex. Saan kaya napunta talaga? Sabi kasi kulay blue daw yon. Hindi naman namin alam kung talagang blue nga. Or, kasi ang daming blue dito. Meron ditong violet, merong yellow, di ba? So, ayoko na guys. Nandun kasi yung
Nakakatakot talaga eh. Iba din yung amoy talaga. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक परछाई देखी जा सकती है, लेकिन जैसे ही वो कैमरा दूसरी जानिब घुमाता है और जब दोबारा उस जानिब कैमरा रोटेट करता है तो वो मखलूक वहीं पर नहीं होती। तो क्या वाकई ये जगह हॉन्टेड है और गाला ने किसी मखलूक को कैप्चर किया और या उनका कोई दोस्त जो ये अच्छी एक्टिंग कर रहा था? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।